Good evening, everyone. So let's start the session. What we'll be discussing in this session? The PYQ based themes. Few important locations will go through. Okay. Then I will be guiding you people to look at the locations. Like whenever you see any particular location which is in news, what all things you should cover, right? Whenever you see any particular location in PYQs, what all things, maybe like it may be a water body, it may be the neighboring countries, and what all, right? The capital cities, the important cities, how to look at a geographical location. This will be the first task, right? Secondly, I will be providing you the list of the geographical mapping based questions and also the explanation and also the images over there itself. So all your geographical locations, both with respect to the world and and again with respect to India, will be covered over there, right? Few of the questions specific to Indian locations are again based on the rivers drainage system. So I will tell you that these things are there in basic NCERT, so refer to that directly. Okay, so I'm not burdening you people with any extra resources over there. Okay, I will guide you through that document. Fine. And the third thing what we'll be discussing is I will be providing you a list of important geographical locations, both the world locations and the Indian locations which were in news, right? So that will be a exhaustive list. That will be a very comprehensive list. Okay. Uh, on the basis of which I will be coming up with a video on our main channel, right? With respect to geographical location, there will be two videos. That is, first will be the geographical locations in the world which were in news. Then the second video will be with respect to India, and a third video will also be there. That will be an updated one, which might come in mid of April or at the end week of April. Okay, in the end week of April, basically. Got it? So without any delay, let's start the session. This is me. We'll be practicing MCQs, particularly maps. Okay, we'll also see maps from the point of view of PYQs. Okay, with respect to MCQs, many of you might be knowing that in my Telegram channel, I am putting the MCQs also. Okay, so you can visit that particular Telegram channel as well. Okay, now we'll discuss a bit in more detail. Just a second. Yes. So what is the first aim of this webinar? The first aim of our webinar is to cover the geographical locations, geographical mapping based themes which have been asked in PYQs. Okay, तो PYQs based जो themes होती है अपन वो देखने वाले हैं कि what all questions UPSC is asking, what all are the important geographical locations which UPSC have pinpointedly asked in the previous years. Okay, so roughly we have discussed about last 12 years. 10 to 12 years के questions मैंने अपने इस document में लिए हैं, right? Now, see, geographical mapping based questions. If you have seen the PYQs, and also we'll be seeing all those PYQs now also in this session, you will get to see that from two different, what we can say, two different sources, the location based questions are asked. The first source is the PYQ themes. Okay, so many of you people have revised geography. आप सभी ने geography revise किया होगा. You might have read multiple books. Someone might have read GC Leong, someone might have read the basic NCERT, someone might have read the class notes. So whatever be your sources, what I would advise you guys is, whenever you come across any location, okay, whenever you come across any location which is there in your basic sources, you should be thorough with that. So, for example, let me ask you, where is Andes Mountains located? Could you tell me in the chat section, please? Where is Andes Mountains? ANDES. Andes Mountains, South America, right? Now, this information is directly given in the NCERT. Okay. Yes, western side of South America. Good. Okay. Again,
Rockies, Rockies Mountains, western side of North America, right? So these are the basic informations. These are this particular data which I am telling you, these particular facts, which are the very basic information. So these are there in your basic sources, be it your NCRT, be it your notes. अगर आपके notes हैं, आपके notes में ये सारी information होनी चाहिए, okay? Because all these things are there mentioned in the NCRTs. So what is the idea? What is the idea to do this thing? Suppose if any location is asked from your NCRT, so you should not be compromising on that particular question. When we will walk through the PYQs now, you will get to see that many of the questions were directly asked from the NCRTs, particularly the rivers. Okay, rivers. So there is a chapter Indian drainage system, right? जिसमें बहुत सारे rivers है, इंडस वैली, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी. सो ये जो सारे रिवर्स है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इवन गंगा, राइट, द ट्रिब्यूटरीज हैव बीन आस्क्ड. Straight direct question to the point, directly it's given in the NCRT. Okay, so whenever you will refer to the NCRTs and whenever you will refer to the India Physical Environment NCRT, in which the reverse drainage system is given, I will ask you to read the reverse thoroughly. Okay, you can make a diagram kind of thing. You can make simply a diagram, a fishbone diagram, where you can talk about that this is the river, this is the left bank tributaries, this side you have right bank tributaries, right? So such kind of notes you should prepare. Got it? So merely reading won't help. You should have a kind of mind map, such kind of mind map with you ready, particularly with respect to the rivers. Okay, particularly with respect to rivers, because there are questions every year. There is a question on rivers, right? If we leave 1 or 2 years, कुछ ना कुछ rivers के related questions पूछे जाते हैं. So you should be thorough with this particular technique, okay? Or let's say this particular way of remembering the left and right bank tributaries. Again, with respect to left bank or with respect to right bank, you can ask chat GPT. Simply you can feed the names of the left bank and right bank tributaries in chat GPT, and you can directly ask it to provide some mnemonics. Okay, as simple as that. So this will make your task easier. Okay, this will help you, this will make your task easier. Fine. Okay, now moving to another PYQ based themes. So we'll also look few regions today, and we'll also look water bodies. So by water bodies I mean particularly major seas. Okay, now whenever you refer to any particular region or any particular water body which have been asked in PYQs, what all things you should refer to? The neighboring countries, the neighboring water bodies, if any particular water body is there within that big water body. Okay, तो ये सारी चीजें जो ना इस तरह से आपको देखना है, सोचना है, right? I will give you the way of see, I will be providing you the document where all these things are directly mentioned. देखो यहाँ पे सारी चीजें दी गई है, ठीक है? You can directly refer to this as well, but I'm willing to develop your mindset in such a manner so that if any particular question is asked, you should be able to what you can say, like comprehend that where exactly it would have been situated. अगर कोई PYQs में आपने कोई लोकेशन देखा, अगर कोई न्यूज में जो लोकेशन है वो आपने देख लिया, right? So you should be able to understand how to make notes or understand how to read that location. Got it? This document will be there with you people. You can directly refer to this document as a revision kind of thing. But I want you people to develop that kind of what you can say, that kind of approach to look at the locations. Okay. So again, I'm saying merely spoon feeding won't help, right? As we at UPSC Prep believe in this particular thing, that merely spoon feeding won't help. We will be giving the document, right? But we will also be willing to develop that kind of approach
so that you will become self dependent. Got it? Now, तो एक तो हम लोगों ने देखे कि रिवर्स के बेसिस पे किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है. रीजन्स, वाटर बॉडीज, whatever will be there, we will be discussing in today's session how to approach them. Okay, fine. Someone is asking, sir, do we need to do the river system of India or the world? I would advise do the river system of India. Okay, if you go with respect to world, there are multiple rivers, it won't be able to read everything associated with the rivers. But yes, suppose if any river from the world is in news, okay, suppose let's say any particular river is in news, तो उस river का जो है, जो वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है वो रिवर, उसका आप थोड़ा पढ़ाई करो. ठीक है, उसके बारे में आप कंटेंट देखो, टू विच पर्टिकुलर कंट्रीज दैट रिवर प्रोसेस, एंड इसके बारे में जो बेसिक चीज है उस वैसे आपको देखना पड़ेगा. गॉट इट? ओके, नाउ fine. So in today's session, we will be discussing these three things. Okay, the approach, as I told earlier, कि reverse को किस तरह से पढ़ना है, we'll be seeing again with the help of PYQs. Regions we will be discussing, water bodies we will be discussing. Okay, now locations in news. Locations in news. So I will be coming up with 3 videos as I do this every year. In these 3 videos, what I will be doing is, the first video will be the locations which were in news at the world level. Okay. Second, locations in news at the Indian level. Indian locations in news. Now ये जो 2 वीडियो होते हैं ना, पार्ट 1 पार्ट 2, इनमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? द लोकेशंस फ्रॉम जैन 2024 टू दिसंबर 2024. ओके, एंड देयर विल बी अ थर्ड वीडियो वेयर बोथ द वर्ल्ड एंड द इंडियन लोकेशंस जो जो न्यूज में है, ठीक है, राइट फ्रॉम जैन 2025 टू अप्रैल 2025. तो ये 4 महीने का जो करंट अफेयर्स बेस्ड जो लोकेशंस होते हैं वो हम लोग कवर करेंगे. तो वीडियो में आपको कंटेंट मिल जाएगा. यू स्टे ट्यून, मे बी इन दिस वीक, बाय दिस वीकेंड आई एम ब्रिंगिंग दिस 3 वीडियोस. ठीक है, सो रिवाइज इट, वॉच इट, वॉट एवर नोट्स मेकिंग करना है करो, जैसे भी करना है करो. ठीक है, नाउ आई विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द लिस्ट. Today itself I will be providing you the list of these locations. Okay, so need not worry. At least like till I bring the videos, at least go through this list. थोड़ा एक अपना खुद से जो मैंने आपको आज अप्रोच सिखाना है, ठीक है, मैं आज जो आपको अप्रोच सिखाने वाला हूँ आज इस वेबिनार में, उसको आप इस लिस्ट में, इस लोकेशंस में अप्लाई करो. गॉट इट? फाइन. I will share this list with you people. Okay, immediately after the, well, like at the end of the session I will be displaying what exactly is that list. अच्छा, let me tell you, देखो ये है लिस्ट. ठीक है, वर्ल्ड geographical locations in news. So I have categorized it according to the region. एशिया में, ठीक है, कौन से लोकेशंस न्यूज में थे, राइट? नाउ दिस लिस्ट इज अगेन बेस्ड ऑन जैन 2024 टू December 2024. Fine. The updated one will come after a few days, right? So I have categorized the regions, I have categorized the locations within that region. News bhi hai, whatever things I have highlighted in bold, right, that is the location. Like first, Asia ke geographical region mein what is important? Shiveluch volcano, right, which is in Russia basically. Then Eurasian region जो है, इसमें क्या क्या है न्यूज में? तो सिटी ऑफ वेलेदार in you again with respect to Caspian Sea, right? Then Black Sea was in news again, Kerch Strait and Crimea. So all these locations are there at the world level, also at the Indian level. Indian geographical locations bhi hai, right? In these Indian geographical locations, what you will get to see? Archaeological sites which were in news, right? Protected areas, a very important topic. From entirely this 1 2 3 4 5 6 7 8, this 8 points, you will get to see at least 1 or 2 questions, both integrated in geography or environment. ठीक है, water bodies, इसमें भी rivers and all मैंने दे रखा है. ठीक है, so as of now what you people should be doing? Okay, see, first the priorities, learn the approach in today's session.
Second, apply on this list. So apply the approach what you will be learning today on the locations in this list, right? It will hardly take 2 or 3 days. 2 or 3 days, maybe by giving 3 to 4 hours. Okay. So roughly it will take max to max 12 to 13 hours to apply the approach on the geographical locations. And once you are done with this, then what you should do is, when I will be bringing the videos to you, okay, most probably by the end of this week, I will be bringing you people the what you can say, the videos, particularly based on the geographical locations, part 1, part 2 and part 3 will be coming up later, right? तो ये जो geographical locations है, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, एंड देन कम वॉच द वीडियो, एंड द वीडियो विल बी लाइक अ रिवीजन फॉर यू पीपल, राइट? जो मैंने जो वहां पे वीडियो में बताया होगा ना, वो आपके लिए एक रिवीजन काइंड ऑफ थिंग एक्ट करेगा. गॉट इट? So this is expected from you people. I have given my 100%. I have jotted down multiple locations, categorized it, okay, and given it to you. Now, your aim is, your homework is to learn the approach in today's session, apply it on the list, and then watch the video. In the videos, I will be going in detailed manner. Okay, I will be discussing where is Denmark, Denmark से related important neighboring locations क्या क्या है, neighboring countries क्या क्या है. Suppose a water body is there in news like Baltic Sea, तो Baltic Sea किस countries के साथ border share कर रहा है, ठीक है? Baltic Sea के अंदर कोई important gulf है, is there any bay or gulf or some small water body within the Baltic Sea? ये सारी चीजें we'll be discussing in detail in the video. Okay, but at least do this particular homework. Fine. Okay, coming back to the main thing. Now, at the third level, what you people can do is, see, many of you people might be knowing that I have my own Telegram channel as well, right? So it's Rohan Sir History, right? It's Rohan Sir History. So you can join the Telegram. Why I'm telling you people? Because in that particular channel, I have been providing geographical locations in news. Okay, daily henceforth, I have planned to provide 1 or 2 geographical locations in news. Okay, and also at the end of the day, that's like 7 p.m. or so, I'm providing the MCQ based on that particular locations, right? So here, let me highlight it again. Here on this channel, what I'm doing is I'm providing you people the locations in the morning. Locations are like 1 or 2 locations in the morning I'm providing, and in the evening again the MCQs are there, particularly on the location which I have given in the morning. Okay, so this idea basically came to me so that at least you can be able to solve 1 or 2 questions which are there particularly based on the locations. At least itna questions aapka nikal gaya, to it's like the cost benefit is good over there. Fine. So all these things we discussed, right? Now, apart from that, whatever sectional test you are giving, okay, whatever sectional test it might be any classes sectional test, it might be any FLTs. There also you will come across some important geographical locations which might not be covered by me, or which might not be covered in your basic NCERTs or whatever. So अगर ऐसे कुछ important locations मिलते हैं आपको जो टेस्ट में पूछे गए हैं, right, I would ask you people to jot it down somewhere, because see that can be a reason, like मतलब कहीं ना कहीं तो वो important geographical locations जो है वो छूट गए होंगे, right? तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस है वो वहां पे लिख लेना, उसका कंटेंट जो है ना टेस्ट सीरीज में आया है, आपने नहीं पढ़ा है तो वहां पे लिख लेना है कहीं पे, तो आपको उसके नोट्स बनाने हैं, राइट? ओके, फाइन. Yes, these daily locations will also be covered in the video, so no need to worry, ऋषभ. ठीक है, फाइन. So let's start with the actual content, guys. See now, जो कुछ है छोड़ दो, अभी अप्रोच लर्न करो, ठीक है? बाद में ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, जो कुछ करना है, ठीक है? अभी छोड़ दो, अभी फिलहाल जस्ट
look at this particular location, this particular question. Fine. See, guys, there are n number of questions which have been there in the PYQs. We will be discussing a few. I will be telling you a approach to develop. बाकी तो सारा content मैंने यहाँ पे दे रखा है. ठीक है, तो the homework has been done. I will tell you how the approach should be. Okay. Post your doubts in the Q&A section. Guys, whatever doubts you have, please post your doubts in the Q&A section. I will be discussing all your doubts at the end of the session. Okay, let's now completely be focused on the approach. क्या करना होता है world locations में, map based questions में. Okay, now see, I will be teaching you from the point of view of an aspirant. Okay, so फिलहाल के लिए ये भूल जाओ कि मैं टीचर हूं. फाइन. कंसिडर मी एज अ काइंड ऑफ योर फ्रेंड जो आपको लोकेशन पढ़ा रहा है. ठीक है, ये लेवल पे मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूं, तो इस तरह से अपन देखेंगे. सपोज देयर इज अ क्वेश्चन in front of me in the PYQ, right? The area known as Golan Heights sometimes appear in the news in the context of the events related to. So basically, as the question looks, it was in news somewhere or the other, and that is the reason the question was asked, right? ये न्यूज है, इन न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था. बट नाउ इट वाज वे बैक इन 2015. Golan Heights is the area, is the region, okay, or let's say particularly in the Middle East. And Middle East region is every year in news. Every year, I am again saying, double underlined. Okay, every year Middle East is in news for one or the other reason, right? So now, what is the macro theme of the location here? What is the macro theme? The Middle East. Okay, the Middle East becomes a macro theme for you people now. Okay, ठीक है. Now, explanation बाद में देख लेना. एक्सप्लेनेशन में इतना कुछ है नहीं. डायरेक्टली वी विल सी द लोकेशन. सो सी लोकेशन यू पीपल कैन डायरेक्टली रेफर टू हियर एज वेल, बट आई एम टेलिंग यू द अप्रोच किस तरह से करना होता है. तो व्हाट विल डू, विल डायरेक्टली गो टू द गूगल. ओके, गूगल बाबा की मदद लेंगे, राइट? Many of you might have atlas, right? बहुत लोगों ने अपने पास एटलास रखा होगा. यू कैन डायरेक्टली रेफर टू द एटलास. एटलास में इंडेक्स में जाओ, मिडल ईस्ट वाला जो रीजन है, जस्ट ओपन दैट. ओके, many of you, if you have an alternate device with you people, just गूगल करना है सिंपली मिडल ईस्ट रीजन में ये सारी चीजें आपको दिखेंगी. ओके, सो विल ओपन इन द मैप्स. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द मिडल ईस्ट. फाइन. सो दिस रीजन as written over here. ठीक है, यहां पे देख सकते हो आप. So see, we are discussing Middle Eastern region. Middle East, ठीक है. Middle East को Middle East क्यों बोला जाता है? As simple. See, whatever the names which have been given, East, West Asia, Middle East. ये Middle East जो है ना, since this region is to the eastern side of Europe, okay, and far east नहीं है, वो मिडल में है कहीं, तो that is the reason it's Middle East. ठीक है, तो ये टेक्निकलिटी छोड़ देते हैं. ठीक है, हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करते हैं मिडल ईस्ट रीजन. सो व्हाट एग्जैक्टली कंप्राइजेस ऑफ मिडल ईस्ट? सऊदी अरेबिया, राइट, इराक, कुवैत, ये जो सारी चीजें जो यहाँ पे दिख रही है ना, दिस कंप्राइजेस द मिडल ईस्ट. विल रेफर टू आवर लोकेशन. हम लोग जो देख रहे थे, ठीक है, इट वाज गोलन हाइट्स. So this is where the Golan Heights is situated. You people can see, right? The one which is marked in red. This is the Golan Heights over here, right? Now, whenever you refer to any location, it's important for you people to see with which neighboring countries the land border is shared. अभी global Golan Heights जो है ना, ठीक है, Golan Heights, it's nothing, it's not a country, it's a region particularly. ठीक है, गोलन हाइट्स एक रीजन है, इजराइल ऑक्युपाइड टेरिटरी है. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ व्हेन वी जूम आउट अ बिट, यू कैन सी इजराइल, एंड इजराइल का नॉर्थ ईस्टर्न जो साइड है वो है गोलन हाइट्स, राइट? नाउ व्हेन वी आर रेफरिंग टू द थीम ऑफ द मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली द गोलन हाइट जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है, अभी हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि किन किन नेबरिंग कंट्रीज के साथ इसकी बॉर्डर शेयर हो रही है, विथ विच ऑल कंट्रीज द बॉर्डर इज बीइंग शेयर्ड. फाइन. So Israel itself is the like the country, right, which is occupying that particular region, Golan Heights. Okay. To the north you will see Lebanon. North में आपको क्या मिल रहा है देखने के लिए? Lebanon. Okay. Then see, towards this particular side, towards the northeastern side, you are having Syria. Okay. You are having Syria.
towards the eastern side you are having Jordan. Fine. So Golan Heights is situated in between these particular four countries. ठीक है, मतलब इजराइल का पार्ट ही है वो रीजन, बट वो रीजन सिचुएटेड कहां पे है? इजराइल के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, एंड इट्स शेयरिंग इट्स बॉर्डर, इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विथ लेबनान, सीरिया एंड जॉर्डन. दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, राइट? फाइन. नाउ zooming in a bit more, when you zoom in it, ठीक है, यहां पे आपको देखने मिलेगा there is a sea, a small water body, sea of Galilee. ठीक है, sea of Galilee. Now see the name properly. Okay, sea of Galilee. Fine. Now अभी सिर्फ इतना देखना नहीं है, इसके आगे भी जाना है. ठीक है, once you have done with a particular location which was there in the PYQs, अभी यहां पे इसके एक स्टेप आगे जाके आपको क्या देखना है? यू नीड टू रोम अराउंड अ बिट. फाइन. दिल्ली जाके सिर्फ आप यूपीएससी का इंटरव्यू तो नहीं दोगे, राइट? आप थोड़ा दिन रुकोगे वहां पे, आप देख के आओगे, हुमायूं टॉम्ब देखोगे, राइट? जामा मस्जिद देखोगे, रेड फोर्ट देखोगे, लोटस टेम्पल, यहाँ वहां जाके घूमोगे, राइट? हो सकता है एक दो दिन का और टाइम है तो आप आगरा भी जाके आओ, राइट? तो इतना तो घूमना बनता है. गॉट इट? तो यहाँ पे गोलन हाइट्स देख लिए अपन ने. ठीक है, तो एटलीस्ट हैव अ लुक ओवर द अदर रीजन्स एज वेल. तो अदर रीजन्स में what all are the locations? Lebanon we have. So let's look a bit more in detailed manner. Lebanon, if you see, it's entirely okay surrounded by it's towards the eastern side, it's surrounded by Syria. Towards the south, it's surrounded by Israel. Okay. Now Jordan, have a look. Jordan is sharing its border with which countries? So it's Israel, okay, Syria, Iraq, and what is the name of this country? Saudi Arabia. Fine. Syria, Israel, Iraq, Saudi Arabia. Got it? Now Israel, Israel again is very important from the point of view of geopolitics, international geopolitics. ये न्यूज में होता है, कभी ना कभी इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो न्यूज चलते ही रहता है, राइट? सो इजराइल इज शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ विच कंट्रीज? ओके, यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे, डिटेल में इतना नहीं विजिबल होता है तो थोड़ा जूम आउट कर लेंगे. ठीक है, यू विल गेट टू सी as we discussed earlier also, it's sharing its border with Lebanon, Syria, Jordan. Fine. And towards the western side, you can see Egypt is also sharing its border with Israel. Now, is Saudi Arabia sharing border with Israel? So let's look. It's not sharing its border, right? It's not sharing its border क्योंकि सऊदी अरेबिया का बॉर्डर यहाँ पे आके खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे जॉर्डन का बॉर्डर शुरू है. ओके, नाउ सी अ लोकेशन अकाबा. सी दिस इज अ वाटर बॉडी. व्हेन यू विल जूम इट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो. व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटर बॉडी ओवर हियर? इट्स गल्फ ऑफ अकाबा. ओके, द लोकेशन इज अकाबा ओवर हियर. ये जो है ना गल्फ है, गल्फ, व्हाट डू वी मीन बाय गल्फ? अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, राइट? इन जनरल उसको ही बोलते हैं ना गल्फ. तो गल्फ ऑफ अकाबा, राइट? नाउ गल्फ ऑफ सुएज. So immediately towards the left side of Gulf of Aqaba is Gulf of Suez, जहां पे situated है Suez Canal, right? This is the city of Suez in Egypt. यहाँ पे Suez Canal है. See, this is the border. Okay, what do you say? The water body through which the canal is situated, Great Bitter Lake. ठीक है. Now coming out a bit, let's zoom over here. Sea of Galilee हम लोगों ने देख लिया. Now there is again a water body. There is again a water body which is being shared by multiple nations. Dead Sea. Okay, Dead Sea किसके बीच में है? ये किसके बीच में शेयर हो रहा है? The water body of Dead Sea is shared between Israel and Jordan. Fine. Okay. Now, two important locations are also there within Israel. So this is West Bank, which is shown by the dotted line. This particular part. ये वेस्ट बैंक है. यहाँ पे क्या है? गाजा स्ट्रिप. ओके, टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड यू हैव गाजा स्ट्रिप. ओके, नाउ टेल मी, what is this water body? Could you tell me?
Very simple question, very simple question. What is the name of this water body over here? Yes, very simple. ठीक है? It's Mediterranean Sea. It's Mediterranean Sea. Fine. Okay. So this is how you should look at a location. बस इतना ही देखना है. Okay. Now, either you can make notes in handwritten manner somewhere. ठीक है? Otherwise, you can directly refer to this PPT. यहाँ पे कंटेंट दिया गया है. ठीक है? Explanation is given. Directly refer to the explanation over here. Or again, the locations are given over here. Directly you can refer to this. Fine. Okay. Now, moving to the another location. Now here, okay. So we forgot that we have a pen also. Which one of the following countries, of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? Does not open out to the Mediterranean Sea. Okay. Now we have seen these locations. अभी 1 मिनट पहले हम लोगों ने ये लोकेशंस देखे हैं, राइट? देयर वाज अ वाटर बॉडी which was being like it was sharing its border with a few nations. कौन से nations थे उसमें? There was Israel, right? There was Lebanon. Syria भी था, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट था, right? Jordan was not there. Okay, so in such case, again, see, you can directly refer to the location which I have given over here, or directly come back to the Google, again see the same location what we were discussing. कहाँ पे गया maps? Okay, see here again, Jordan. Jordan का border कहाँ तक है? This is the limit of Jordan, right? Jordan is not sharing its border with Mediterranean Sea. This is Mediterranean Sea. This is Mediterranean Sea. Okay, Jordan is not sharing its border with Mediterranean Sea. Now, see the question. Both the locations were in news in 2020, sorry, in 2014, and that is the reason it was asked in 2015. ठीक है, somewhere or the other आगे पीछे होता है, locations news में होते हैं and questions पूछ लिए जाते हैं. So the geographical locations what we'll be discussing in the videos, okay, just be thorough with that. Just be thorough with that. Now, also remember जो PYQ based themes है वो भी आपके लिए important होती है. Now the Middle East is a very important theme for you. Secondly, Mediterranean Sea is now a theme for you people. Okay, Mediterranean Sea is also a theme for you. Now अभी और डिटेल में जाके हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेडिटेरेनियन सी को लेके पढ़ेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स सर्च इन द लोकेशन मेडिटेरेनियन सी. फाइन. नाउ मेडिटेरेनियन सी, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी? अगेन द सेम थिंग. नाउ हियर वी आर सीइंग अ वाटर बॉडी. फ्यू मिनट्स बैक वी डिस्कस्ड व्हाट यू कैन से रीजन, पर्टिकुलरली अ कंट्री, अ रीजन, राइट? एक लैंडमास को हम लोगों ने डिस्कस किया. अभी हम लोग एक वाटर बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं. फाइन. ओके, so with respect to water body, the things are simple again. First, which all countries are sharing the border with that water body? This you should keep in your mind. क्या क्या है, कौन से हैं? Let's start from here. Okay, fine. So it's Morocco. Fine. M. Then Algeria. Then Tunisia. Here you are having Libya again. Egypt. Okay. So when you refer to the 5 countries which are at the bottom, you can remember a mnemonic. You can remember a mnemonic. Metal. ठीक है, METEL, metal, या फिर METAL, metal. metal क्या होता है? ठीक है, anything is a metal, right? METAL, that will be the correct spelling, right? Morocco, Egypt, Tunisia, Algeria and Libya.
Got it? Morocco, Egypt, Tunisia, Algeria, and Libya. So either metal or METAL, metal, anyhow you can remember this. Fine. Now, these locations we have already discussed earlier. कौन से locations थे? सीरिया, लेबनान, इजराइल. ठीक है, सीरिया, लेबनान, इजराइल हम लोगों ने अभी देखा है. ठीक है, तो आपके माइंड में वो फ्रेश होना चाहिए. राइट नाउ साइप्रस. Fine, it's located entirely within the Mediterranean Sea. Coming to the north. Now, north locations are quite a bit tedious to remember, right? So, in such case, whenever the locations are quite a bit tedious to remember, always remember which are not sharing the border. ठीक है, जहां पे यूपीएससी आपको ट्रैप कर सकता है. तो विल रेफर टू दिस हाउ टू रीड. सी फर्स्ट, तुर्की ए. तुर्की ए erstwhile नेम वाज टर्की, राइट? टर्की, तुर्की ए कैसे भी याद रखो. देन ग्रीस. ओके, अल्बेनिया. ग्रीस, अल्बेनिया. Montenegro. Fine, this small part over here, Montenegro. This is Albania. This is Greece. Fine. Then Bosnia and Herzegovina. यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है, अच्छा नहीं करता है गेस. ओके, सो इट्स नॉट शेयरिंग बॉर्डर. गुड. फाइन फाइन. सो दिस इज अ ट्रैप गाइज. थोड़ा गूगल में भी आपको ना जूम करना पड़ेगा. यहाँ पे दिखेगा कि लोकेशन शेयर कर रहा है, बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है. ठीक है, सो इन सच केस अगेन रिमेंबर वन थिंग. इफ अगेन यू आर कंफ्यूज कि ये बॉर्डर शेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, कम बैक, सी विथ रिस्पेक्ट टू द मेडिटेरेनियन सी. एज आई हैव हाईलाइटेड ओवर हियर, बॉस्निया हर्जेगोविना कर रहा है. बट गूगल ने क्या दिखाया जूम करने के बाद? कहाँ पे गया ये? ओके, यहाँ पे नहीं कर रहा था. बट अगेन इफ यू जूम इन अ बिट, so you can see a very small territory, a very small territory is sharing its border. Okay, a very small territory, right? So you need to be very careful again. Okay, if you look at this particular point, it might not be looking that it's sharing the border, but it's sharing just a kind of this particular dot. Okay, at this particular dot it's sharing the border. Fine. Now moving little bit upwards, it's Croatia. Croatia भी है. Fine. Slovenia. Slovenia is again sharing its border. Again, it's having a very little part, right? Again, it's having a very little part. Then Italy itself, because Italy का जो पूरा जो रीजन है, ठीक है, पूरा अपने आप में जो कंट्री है मेडिटेरेनियन सी पे ही है, राइट? दिस पार्ट ऑफ इटली इज नोन एज सिसिलीज आइलैंड. ठीक है, सिसिलीज आइलैंड बोलते हैं इसको, राइट? फ्रांस इज देयर. ओके, एंड देन स्पेन इज देयर. फाइन, फ्रांस, स्पेन. नाउ विल सी. अभी हम लोगों ने क्या देखा? जो इंपॉर्टेंट आपके जो कंट्रीज है, वी हैव सीन द इंपॉर्टेंट कंट्रीज ओवर देयर, राइट? कंट्रीज विच आर शेयरिंग देयर बॉर्डर विथ मेडिटेरेनियन सी. ओके, नाउ विल सी अ फ्यू इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज ऑल्सो. थोड़ा और जूम करेंगे हम लोग, वाटर बॉडीज देखेंगे. तो मेडिटेरेनियन सी जो आपको इस तरह से दिख रहा है अभी, राइट, इट्स ऑल्सो हैविंग अ फ्यू इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज विद इन इटसेल्फ, राइट? So see to the first we'll see this particular part. यहाँ पे छोटे छोटे गल्फ है, तो इतना मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ग्रीस. टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ ग्रीस, this particular water body, the name is Aegean Sea. Okay, Aegean Sea. Fine. Aegean Sea is the region which is towards the right hand side of Greece. ठीक है, it's the part of Mediterranean Sea itself. तो Aegean Sea जो है, it's also situated within the Mediterranean Sea. Okay, remember this. Then now you will get to see three important water bodies. Adriatic Sea towards the right hand side of Italy. Okay, towards the left hand side of Montenegro. Fine. Then Tyrrhenian Sea. Okay, Tyrrhenian Sea, and then the Ionian Sea. So Ionian Sea, Adriatic Sea, Aegean Sea,
टेरेनियन सी, ऑल दीज आर द स्मॉल पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी। ये बड़े मेडिटेरियन पार्ट का एक छोटा सा पार्ट है, बड़े मेडिटेरियन सी का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर। फाइन। अगेन, बेलारिक सी, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू इग्नोर दिस लोकेशन। बेलारिक सी भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है, बार्सिलोना के नीचे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, बी फॉर बार्सिलोना, बी फॉर बेलारिक सी, ओके, टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ स्पेन। फाइन। नाउ अल्बोरान सी, Alboran Sea is the extreme western part of your Mediterranean Sea. Okay, extreme western part of your Mediterranean Sea. Now, here you will get to see a location, Gibraltar. And what is this? This is a strait. Strait means a small water body which is connecting two bigger water bodies. स्ट्रेट क्या होता है? एक स्मॉल वाटर बॉडी होती है जिससे दो बिगर वाटर बॉडीज जो है वो कनेक्ट होती है, राइट? So here you get to see a small water body that is called as Strait of Gibraltar. Strait of Gibraltar. Okay, Strait of Gibraltar. And it's connecting two important water bodies. One is itself the Mediterranean Sea. Okay. अरे यार. One is the Mediterranean Sea itself, and it's connecting Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean, specifically the North Atlantic Ocean. Got it? ठीक है, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन। तो बस अभी मेडिटेरियन सी को हम लोगों ने कैसे पढ़ा? फर्स्ट वी लुक्ड एट द इंपॉर्टेंट कंट्रीज, देन वी लुक्ड एट इंपॉर्टेंट स्मॉल वाटर बॉडीज, ऑल्सो वी हैव सीन स्ट्रेट। स्ट्रेट जो है वो भी एक पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज ही आता है, ठीक है, वो वाटर बॉडी का ही एक पार्ट है, राइट? नाउ you can go in more detail. You can see when you zoom in a bit, see here there is agency, right? Agency is again connected to Sea of Marmara, connected to the Sea of Marmara. And this Sea of Marmara is now, you can see, it's connected through this particular strait to Black Sea. ओके, तो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में एक वाटर बॉडी है, इस्तांबुल के इधर, ठीक है। दिस स्मॉल वाटर बॉडी इज देयर. Towards the north, you can see Black Sea. Towards south, you can see Mediterranean Sea, and there is a small water body here as well. It's Sea of Marmara, right? Sea of Marmara. Okay. Yes, someone has commented the straits as well. Good, good, Antara. So it's good that you know the factual details. यहाँ पे आप अब अगर zoom करते हो थोड़ा और, ठीक है, हाँ. So I guess it's the it, sorry, the name is not visible over here. So see, there are two straits. Okay, this is the first strait which is connecting Black Sea to the Sea of Marmara, and this is the second strait over here, where it's connecting Sea of Marmara to the Mediterranean Sea. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है, एज वी सॉ अर्लियर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो ऐसे ही सेम दो स्ट्रेट्स है यहाँ पे, राइट? द फर्स्ट वन विच इज कनेक्टिंग सी ऑफ मरमरा विद द मेडिटेरेनियन सी, इट्स डार्डानल्स, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डार्डानल्स, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डार्डानल्स। एंड जो ऊपर वाला है बॉस्फोरस, ठीक है, तो बॉस्फोरस कैसे याद रखेंगे? फॉस्फोरस से, ठीक है। Sea of Marmara, which is again connected to Black Sea via Strait of Bosphorus, Phosphorus. इस तरह से आप कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके याद रखो, ओके, फाइन। सो नाउ दिस इज इनफ, ठीक है, काफी डिटेल में अपन ने देख लिया है। नाउ ओके, so the third question itself was again on the Mediterranean Sea, right? Mediterranean Sea is a border of which of the following countries, right? So you can be now able to understand, सिंपल सा है। इराक करता है क्या? इराक हम लोगों ने देखा नहीं। लेबनान वाज देयर, सीरिया वाज देयर, जॉर्डन नो। नाउ सी, it was asked in 2017. Early question was asked in 2015. 2 years afterwards it was asked. तो this is what exactly is the beauty of PYQs. PYQs में जो themes होती है
guys, these themes from PYQs, they gets repeated. Okay, themes gets repeated. Okay. Okay. So this is what we discussed in a bit detailed manner with the help of Google. ठीक है. I'm providing you all these things directly. यहाँ पे है, आप directly पढ़ सकते हो. You need not uh, give that much efforts. But what I am willing to is यहाँ पे ना डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो यार, इतना इजी है ये, बट कुछ थोड़ा मेहनत आप करो. सी, व्हेन यू गिव मोर एफर्ट्स ऑन योर माइंड ना, जब आप खुद से गूगल कर रहे हो, जब आप खुद से एटलास देख रहे हो, एटलास देख के आप लोकेशंस ढूंढ रहे हो, तभी आपको वो चीजें याद रहती है. ओके, लाइक मियरली गिविंग दिस डॉक्यूमेंट टू यू पीपल, मियरली रीडिंग रिवाइजिंग, उसमें इतना एफर्ट्स नहीं लग रहा है आपके माइंड का, तो चीजें इतना देर तक याद नहीं रहेगी. जब आप खुद से करोगे वो, ठीक है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग, राइट. मार्केट में अभी बहुत सारे वीडियोस चलेंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऐसे करो, ये करो, ठीक है, रीड दिस डॉक्यूमेंट, इसमें से रिवाइज करके हो जाएगा, ये सब सारी चीजें, ठीक है. दी स्पून फीडिंग, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू पुट दैट एफर्ट्स, ठीक है, इफ यू नीड हेल्प वी आर देयर, राइट. तो जो अप्रोच है ना, अप्रोच एक बार डेवलप कर लेना गाइज. व्हेन यू हैव दैट अप्रोच, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, यू कैन क्रैक एनीथिंग, राइट. यू कैन बी एबल टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर व्हाट कैन से माइंडसेट, जिससे आप वो चीजें खुद से कर पाओ. गॉट इट, फाइन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव shrunk immensely or let's say dried up in the recent past due to human activities. Recent past, अगेन ये जो है न्यूज में था. ठीक है, what all locations are discussed here? Aral Sea, Black Sea, Lake Baikal. Now let me tell you, Lake Baikal, it's entirely in Russia. It's not sharing any border with any other country. ठीक है, Lake Baikal you can Google. Aral Sea, Black Sea will discuss. Aral Sea, Black Sea. ठीक है, again the same thing, the same approach which we discussed earlier, that only you need to do. Aral Sea का आप जब देखोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा, Aral Sea is again shared between two countries, Kazakhstan and Uzbekistan. ठीक है, do this particular thing, right? It has shrunk a bit. तो ये न्यूज में था. Okay, fine. Then Black Sea, Black Sea which we discussed a few minutes ago, it is there. यहाँ पे होगा मैप में, Black Sea, right? We discussed this particular strait. यहाँ पे Sea of Marmara है, right? Here you are having Sea of Strait of Bosphorus, which is connecting to the Black Sea. Now, when we look at Black Sea, we will be discussing a few important geographical locations, or let's say few important countries which are sharing the border with Black Sea. तो कौन से countries share कर रहे हैं border? See, towards the north you are having Ukraine. Then this entire part. What is the name of this country, guys? Tell me. What is this country over here? ये किस country का border है? This is Ukraine. Okay. Towards the left hand side, this is Romania. Towards again, towards the south western side, you are having Bulgaria. Okay. Turkey, again Turkey, right? You're having Georgia. Fine. ये कौन है? ये कौन सा country? This is Russia, right? Russia. ठीक है, रशिया है ये. Okay. Now remember, uh, remember there is a trick to remember the geographical what you can say neighboring countries, particularly around Black Sea. तो it's burger. ठीक है, it's the burger. ठीक है, the burger से आप याद रख सकते हो. तो let me tell you, the burger. T for Turkey. ठीक है, तुर्की है. B for Bulgaria, U for Ukraine, R for Russia, G for Georgia, and then Romania. Now, for confusing you people, UPSC may give Moldova एज एन ऑप्शन. ठीक है, मैप के साथ ही आ रहा है ना, मैप में तो दिख रहा है मोल्दोवा यहाँ पे, राइट. मोल्दोवा इज नॉट sharing its border with Black Sea. Remember this. Okay. Now there is a water body.
again within the Black Sea. So let's have a look. Okay, so not now. Fine. So this is Kerch. Fine. This place is Kerch, right? यहाँ पे रशिया के एक्टिविटीज होते रहते हैं. क्रीमिया का पार्ट है. सी दिस इज क्रीमिया ओवर हियर. दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्रीमिया. रशिया यूक्रेन के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं इस पार्ट को लेके. ठीक है. नाउ दिस इज कर्च. This again is a strait. It's a small water body which is connecting the bigger water bodies. Yes, it was in news. The Strait of Kerch was again in news for oil spill. Right? Now, towards the north, you will see this is another water body. It's Sea of Azov. Okay. Sea of Azov. Sea of Azov is connected with Black Sea via this particular strait, which is known as Strait of Kerch. Okay, Kerch एक जगह का नाम है, Strait of Kerch. Yes, shadow fleet of Russia, ये भी न्यूज था. Good. Shadow fleet of Russia, oil spill. So because of these two reasons, this particular location, Kerch, Strait of Kerch, Sea of Azov, Black Sea, ये न्यूज में था. So it becomes important for you people to read this then. Got it? Okay. Fine. Now, see, towns sometime mentioned in news. So these are the towns and these are the countries. Okay. These are the towns: Aleppo, Kirkuk, Mosul, Mazar-e-Sharif, and right side में जो है वो countries है. तो अभी ये जो towns होते हैं ये कुछ issues की वजह से news में होते हैं. Every year these kind of cities are in news. Maybe because of some hunger related issues. ठीक है. Maybe because of some civil war. Right. ये साल भी काफी है न्यूज में. तो आई हैव कवर्ड इन द करंट अफेयर क्लासेस. ठीक है. तो आप एक बार देख लेना. राइट. फाइन. अगेन आफ्टर लाइक व्हेनेवर वी विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, तो वो वीडियो में भी मैं कवर कर लूंगा. ठीक है. फाइन. सिमिलरली द रीजन्स समटाइम मेंशन इन न्यूज एंड द कंट्री. तो ये रीजन्स ये भी बहुत सारे अपन ने देखे हैं. टू लेट यू नो, डार्फर रीजन वाज इन न्यूज. टेल मी गाइस, एनी वन ऑफ यू, इफ यू हैव रेड, वेयर इज डार्फर रीजन? डार्फर रीजन कहां पे है? ओके, गुड. सूडान में है. राइट. ओके. फाइन फाइन फाइन. ओके. नाउ, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी. फाइन. So as I have given you people the approach to read the important geographical locations, just a second, there is a doubt. So will UK also be a country to share the border with me, as Gibraltar is a UK territory? Yes, Kabir. So that is also true. So guys, let me tell you, Gibraltar जो हम लोगों ने देखा था, Mediterranean Sea. ठीक है. I forgot to mention that. ठीक है. Gibraltar. ठीक है. That's the overseas territory of UK. Fine. तो उसको भी आप काउंट कर सकते हो. इट्स ऑल्सो शेयरिंग द बॉर्डर. फाइन. रिमेंबर दिस. ओके. वो मैप में ना वो जूम होके इतना दिखता नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा आपको फिर अवेयर रहना पड़ेगा. यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द पर्टिकुलर लोकेशन ओवर देयर. गॉट इट? फाइन. नाउ, okay, coming to these water bodies: Adriatic Sea, Black Sea. Black Sea we have discussed. Mediterranean Sea we have discussed. Adriatic Sea, Caspian Sea, and Red Sea. Okay. Now, I want you people to do that exercise. See, if you have seen in the initial post which we posted yesterday, we people had asked you to bring world map, right? World map आपको मैंने मतलब रिक्वेस्ट किया था कि आप लेके आओ साथ में. So this is what you should do now. Adriatic Sea हम लोग देखते हैं. Okay. बेसिकली हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी लोकेशन में. Adriatic Sea. ठीक है. So now in your world map, see, it was expected कि ये जो सारे locations है, Mediterranean Sea, Levant region is nothing but this particular part. ये जो है ना लेबनान, सीरिया, ठीक है, इजराइल, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको लिवांट रीजन बोलते हैं. लिवांट रीजन. ठीक है.
तो ये जब हम लोगों ने डिस्कस किया, कैस्पियन सी, ब्लैक सी डिस्कस किया, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू पीपल आर नोटिंग इट डाउन, यू पीपल आर वर्किंग इट ऑन आपका जो वर्ल्ड मैप है, राइट? ओके, नाउ एड्रियाटिक सी, फाइन, Adriatic Sea again. What all countries are sharing the border with Adriatic Sea? Adriatic Sea, particularly, first of all, remember it's the part of Mediterranean Sea itself, right? The countries: Italy, Croatia, right? Bosnia, Herzegovina, ठीक है, Montenegro, Albania. तो ये कंट्रीज है जो कुछ अपने मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज है एड्रियाटिक सी से, राइट? If you zoom in a bit, let's see whether if you get any particular location to see or not. कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट, अच्छा यहाँ पे कुछ एक लेक का नाम है स्कोद्रा लेक, अगेन नॉट अ बिट मच इंपॉर्टेंट यहाँ पे, पर ठीक है, जूम कर रहे हो याद रख सकते हो, ठीक है, देख रहे हो तो याद रख सकते हो. डू यू गेट टू सी एनी पर्टिकुलर लोकेशन? ओके, तो गल्फ ऑफ मैनफ्रेडोनिया, ठीक है, गल्फ ऑफ मैनफ्रेडोनिया. So where is this gulf situated? This gulf is situated in the Adriatic Sea, ठीक है, इटली से लग के है ये. ओके, देन अगेन गल्फ ऑफ ट्रेस्टी, ठीक है, गल्फ ऑफ ट्रेस्टी, फाइन. देन अगेन हियर देयर इज अ लगून, फाइन. तो ऐसे इस तरह से आपको देखना है थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन को. गॉट इट? फाइन. हालांकि जो मेजर गल्फ्स होते हैं इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बट सपोज इफ एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी इज पर्टिकुलरली इन न्यूज, तो थोड़ा इसको डिटेल में जाके आप देखो. ओके, सेम यू शुड बी डूइंग विद द कैस्पियन सी एंड द रेड सी. नाउ एड्रियाटिक सी, सी दीज आर द कंट्रीज, राइट? इसका कुछ बनता है क्या निमोनिक? वी हैव IAMBHC and S. ओके, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है. वी हैव अ रिवर नेम भीमा, भीमा रिवर, ठीक है, डेक्कन इंडिया में अपने यहाँ पे फेमस है, ठीक है. ओके, समवन हैज गिवन अ वेरी गुड mnemonic as well, तो थैंक यू रोशन. IMHSBC, okay, IMHSBC, so that is also good, right? So it's basically uh Italy, fine. A Albania, M Montenegro, right? HSBC, HSBC में क्या है? हर्जगोविना. B and H मे बी टुगेदर, HBSC ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, एंड स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया. तो रिमेंबर एनी ऑफ द न्यूमोनिक, वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन डायरेक्टली रेफर टू दिस, फाइन. सी गाइस, व्हेनेवर यू रेफर टू द नेमोनिक्स ना, इससे फायदा होता है कि आप ज्योग्राफिकल लोकेशंस इजीली याद रख पाते हो. गॉट इट? कमिंग टू कैस्पियन सी आई हैव अ नेमोनिक, इट्स तारिक. यू माइट हैव हर्ड सनी देओल, राइट, in his movies Tariq pe Tariq, Tariq pe Tariq, right? Sunny Deol somewhere sailing in Caspian Sea, right? And he is shouting over there Tariq pe Tariq, Tariq pe Tariq. ऐसे कुछ आप इमेजिन करो, राइट? तो यहाँ पे क्या क्या है? टी, टी माने तुर्कमेनिस्तान, राइट? देन यू हैव ए Azerbaijan, right? R Russia, I Iran, and then K Kazakhstan. Got it? So this is how you can remember the locations. Fine. Okay. TARIK. Turkmenistan, Azerbaijan, Russia, uh, then Iran, and then Kazakhstan. Okay. Now to confuse you people, UPSC deliberately will put Uzbekistan, ठीक है, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के साथ यूजुअली कंफ्यूज कर जाता है वर्ड, ओके, और आर्मेनिया और जॉर्जिया, ठीक है. तो दीज आर नॉट शेयरिंग द बॉर्डर, ठीक है. ये जो AGU है,
AGU, ये बॉर्डर शेयर नहीं करता। ओके, ये बॉर्डर शेयर नहीं करता। ओके, एंड विथ रेस्पेक्ट टू कैस्पियन सी ऑल्सो रिमेंबर that there are two water bodies which are feeding Caspian Sea, the Ural River and the Volga River. ठीक है, यहाँ पे Ural River and the Volga River, these two important rivers are feeding Caspian Sea or have their mouth in the Caspian Sea. यहाँ पे एक important बे भी आपको देखने मिलेगा, काराबोगाज बे। Okay, so these important things you can remember. You can directly go to the Google, सी कैस्पियन सी का लोकेशन, कुछ और चार चीजें आपको नया पता चल जाएगी, राइट? ओके, फाइन। रेड सी, वी हैव सीन दीज टू इंपॉर्टेंट गल्फ्स, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ सुएज, राइट? रेड सी itself, रेड सी is, now remember, see, red sea is sharing its border with which countries? Saudi Arabia, Eritrea, Sudan, Egypt. Okay, Jordan. Why Jordan? Because there was Gulf of Aqaba, and even Israel, because Israel जो है, Israel का भी एक छोटा सा पार्ट गल्फ ऑफ अकाबा में है, right? Israel is also sharing its border with Gulf of Aqaba. Gulf of Aqaba is again the part of Red Sea itself. Okay, Yemen also, fine. And there is a small strait over here. Strait's name is Bab el Mandab Strait, which is connecting Gulf of Aden with Red Sea. Okay, these are a few important geographical locations, मतलब जो आपको पढ़ना है वर्ल्ड वाटर बॉडीज, इंपॉर्टेंट रीजन्स के पर्सपेक्टिव से, राइट? कैस्पियन सी, आयरिश सी, अंडमान सी। अंडमान सी तो ठीक है, चलो, टुवर्ड्स द ईस्ट हैंड साइड ऑफ इंडिया, राइट? अंडमान सी में इतना कुछ है नहीं, इंडिया के ईस्टर्न साइड में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के राइट हैंड साइड में है, इतना याद रखो। यू विल गूगल, यू विल गेट टू सी द थिंग्स, राइट? उसके राइट हैंड साइड में डायरेक्टली इंडोनेशिया, सुमात्रा आइलैंड शुरू होता है। ओके, नाउ Thames, Irish Sea will refer to that. Volga, Caspian Sea, we have already seen this. Okay, Zambezi, Indian Ocean, these are the rivers. Now these rivers, see, here UPSC has asked you questions with respect to rivers, but is it possible for you people to refer to each and every river from the world? It's humanly not possible, right? So what I would ask you people, these four rivers, refer to these four rivers. Okay, you might not be finding this river in the basic books also, basic NCERTs में नहीं है, but since they have been asked in the PYQs, तो इसको देखो जरा, इसमें देखो, इंफॉर्मेशन निकालो इसके ऊपर। मैकोंग रिवर जो है वो कौन से कंट्रीज से जाती है, राइट? फर्स्ट रेफर टू द कंट्रीज थ्रू विच इट पासेस, second refer to where exactly is the mouth, is it meeting any particular water body or not? If it's meeting, then what is the mouth of that particular water body, or the mouth of that particular river? Okay, remember this. Then, is it forming any border, okay, with any other country? जो रिवर है वो किसी कंट्रीज के साथ कुछ बॉर्डर वॉर्डर फॉर्म कर रही है, ठीक है? ये सारी चीजें देखो आप, गॉट इट? ओके, फाइन। और थैंक यू राधिका फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, आयरिश सी, नाउ विथ रेस्पेक्ट टू आयरिश सी, अगेन सी द इंपॉर्टेंट लोकेशन, यहाँ पे यूके है, ठीक है, फाइन। आयरलैंड यू हैव, ठीक है, यूके एंड आयरलैंड के बीच में है आयरिश सी। आयरिश सी गॉट इट्स नेम फ्रॉम द कंट्री ऑफ आयरलैंड इटसेल्फ, ठीक है? आयरिश सी, अगेन टुवर्ड्स द नॉर्थ, इफ यू सी, देयर इज नॉर्थ चैनल, दिस नॉर्थ चैनल इज कनेक्टिंग अटलांटिक ओशियन विथ आयरिश सी, तो इतना याद रखो, फाइन। Two important countries are there, UK as a whole and then Ireland, ठीक है? That's all. Now there are a few bays as well, but देखो इतने छोटे छोटे बेस है, जितना याद रख सकते हो रख लेना, ठीक है? No need to go in detail. St. George Channel, remember this, it's again situated between two important land masses, Ireland and UK के बीच में है। Again North Channel भी जो है Ireland and UK के बीच में है। The difference is North Channel is connecting Atlantic Ocean with Irish Sea.
St. George Channel is connecting Celtic Sea with the Irish Sea. Got it? Irish Sea, why we are discussing PYQ theme? That is the reason we are discussing it. Okay. Uh, yes. Which of the following lakes of West Africa has become dry and turned into desert? ये कुछ important lakes थे, turned into desert. It was in news. That is the reason it was asked. Okay, fine. Now, Levant region, the term Levant. Now again, see guys, I won't ask you कि यहाँ पे ये water bodies है, इनको भी जाके देखो. अभी ये जो है ना, ये न्यूज में था, इसीलिए पूछा था, right? But in general, at least you should have an idea of Lake Victoria. Lake Victoria, one of the major lakes in the world. तो इसका तो एटलीस्ट जो है ना, इसका आप पोस्टमार्टम करो, इसको थोड़ा डिटेल में जाके देखो, वेयर एग्जैक्टली इज सिचुएटेड, राइट? विथ विच कंट्री इज इट शेयरिंग द बॉर्डर, राइट? विच रिवर इज फ्लोइंग इनटू इट, इतना तो थोड़ा कुछ आइडिया होना चाहिए. ओके, Levant region, this is the Levant region which we discussed earlier when we were discussing about the Mediterranean Sea. Levant, the region along the eastern Mediterranean shore, right? So you see now Mediterranean Sea, यहाँ पे it has been asked for third time, right? Mediterranean Sea and the region associated with that becomes very important for us, considering this region is somewhere or the other in news for some or the other reason. ये जो है ना, ये न्यूज में होता ही है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से. ओके, सो एटलीस्ट thoroughly go through this particular location. Okay, yes, this year Gatton Lake can also be asked. Yes, yes, exactly, Aditya. Okay, fine. East China Sea, Senkaku Island. Senkaku Island was in news. It's situated somewhere here. Okay, abhi, now see, it's the part of East China Sea, right? Senkaku Island is again disputed land between China and Japan. China and Japan का dispute चल रहा है उसके ऊपर. अपने लिए यहाँ पे important हो जाता है East China Sea. East China Sea situated towards the east of China, as the name goes, East China Sea. China is having dominance over that region, right? तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा East China Sea sharing its border with 4 countries. Okay. Yes, not 4 countries, sorry, it's 1 2 3 4. यहाँ पे नॉर्थ कोरिया भी है, ठीक है. फाइन. चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, and then Philippines. Okay, Japan. There are 5 countries which are sharing the border, right? East China Sea में, right? Yellow Sea is again the part of East China Sea itself, right? That is the reason we are counting North Korea and South Korea also. ठीक है. Suppose if a question is specifically asked with respect to Yellow Sea, तो येलो सी का जो बॉर्डर शेयरिंग है वो किसके साथ है? चाइना के साथ में, नॉर्थ कोरिया के साथ में एंड साउथ कोरिया के साथ में. ओके, फाइन. सिमिलरली विद द सी ऑफ जापान. सी ऑफ जापान जो है, इसका बॉर्डर शेयरिंग किसके साथ में है? रशिया के साथ में है ऊपर, ठीक है. नॉर्थ कोरिया के साथ में है, कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ में एंड जापान के साथ में. Got it? So this is all you should be remembering. So when you Google this particular location, East China Sea, थोड़ा उसमें जाके डेप्थ में जाके स्टडी करना the locations beside that particular big location, right? You should also refer to the small locations. Yes, guys, post your doubts in the Q&A section, right? Okay. नहीं, वियतनाम, वियतनाम को तो वियतनाम नीचे है ना, वियतनाम कैसे हो गए यहाँ पे? ओके, फाइन. ओके, सो अगेन सी, इन न्यूज, these locations in news वाले जो locations है ना, don't worry about that particular part. I will be taking care of it. न्यूज वाले जो locations है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है. आई विल बी ब्रिंगिंग 3 वीडियोस एंड दैट 3 वीडियोस आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. उतना कर लिया इनफ है, ठीक है. ओके, नाउ अफगानिस्तान. अफगानिस्तान वाज आल्सो इन न्यूज, कंसिडरिंग कि एक इंपॉर्टेंट थीम भी है. वन और द अदर रीजन इज देयर व्हाई अफगानिस्तान इज इन न्यूज, राइट? तो अपने को एटलीस्ट हम लोग अफगानिस्तान देख लेते हैं.
right? Iran, Pakistan, China, fine. Uh, our India's border is also there. So this map may not be highlighting it, but we have our border sharing with Afghanistan as well. ठीक है, तो as per the official sources, India, okay, in India, official sources in India, we share border with Afghanistan. Could you tell me what is the name of that border of India and Afghanistan? एक उसका नाम है. It's the line. Okay. नो पीओके नहीं है वो, पीओके वो अलग वाला है, द्रास भी नहीं है, वाघा भी नहीं है. इट्स डुरांड लाइन. ठीक है, इट्स डुरांड लाइन. फाइन. ओके. चाइना, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. तो दीज आर द कंट्रीज विच आर शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान. अफगानिस्तान जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पे तालिबान रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, COVID-19 सेकेंड फेज, मल्टीपल थिंग्स वर गोइंग ऑन ओवर देयर. नाउ यूपीएससी में आस्क यू विथ रेस्पेक्ट टू किर्गिस्तान. किर्गिस्तान ऑप्शन में दे के पूछ सकता है. किर्गिस्तान इज नॉट शेयरिंग इट्स बॉर्डर. रिमेंबर दिस. ओके, सी दिस एमसीक्यू इटसेल्फ ना. एमसीक्यू में क्या था? 3, 4, 5 were the part, right? Kyrgyzstan itself was not there, Azerbaijan भी नहीं था, right? Very simple question. Okay, बेसिक ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं गाइस, बेसिक ज्योग्राफी से. ठीक है. कैमरून, कॉन्गो रिवर बेसिन, कैमरून. सो कॉन्गो रिवर बेसिन इज दिस वन विच इज हाईलाइटेड इन ग्रीन. इसमें जो कोई कंट्रीज है ये कॉन्गो रिवर बेसिन का पार्ट है, राइट? इट स्पैन्स कैमरून, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, डीआरसी एंड डीआरसी एंड दूसरा रिपब्लिक. ठीक है, दो है वहां पे, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डीआरसी. ठीक है, कैमरून एंड गैबोन. फाइन. नाउ एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज, दीज थिंग्स. न्यूज वाले जो है वो अपने करंट अफेयर्स में मैं कवर कर रहा हूं. ठीक है, सो those locations I'm also covering in our lectures, so you can directly go to the lectures magazines, you can directly refer to these. Okay, Chad, Guinea, Mali, Sudan, all this we have already referred to in our lectures. तो लेक्चर्स की जो मैगजीन है उसमें आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हो. इट वाज इन न्यूज, दैट इज द रीजन वी हैव डिस्कस्ड. व्हेन आई विल बी ब्रिंगिंग थिंग्स ऑन यूट्यूब, ये सारे लोकेशंस वहां पे भी कवर हो जाएंगे. ठीक है. नाउ यूक्रेन in 2023, 22, 23, it was in news because of the Russia and Ukraine war, on the basis of which a question was asked. Again ये news वाले item है. ठीक है, यूक्रेन का जो एक general understanding you people should have, right? You should have an idea that which with which all countries Ukraine is sharing its border, right? Fine. So guys, we will not, देख लेना आप. ठीक है, कुछ लोकेशंस है इंपॉर्टेंट, नॉर्थ सी एंड ऑल. विल कम टू द इंडियन ज्योग्राफी, विल रैप अप इंडियन ज्योग्राफी अ बिट फास्टर, राइट? इंडियन ज्योग्राफी में सी मेजर पार्ट what you should be studying is the rivers, the drainage system. So I will give you the priority. Okay, priority should be given to the drainage system, Indian drainage system, basically the rivers. ठीक है, डायरेक्टली विल टॉक अबाउट रिवर्स. ड्रेनेज सिस्टम नहीं बोलता हूँ इसको, रिवर्स बोलते हैं. ठीक है. Now, whatever rivers are there in your basic NCRTs, you should be very, very, very much thorough with these rivers, because यहाँ पे से directly questions आए हैं. I will show you the questions, right? Secondly, you should be thorough with map of India. You should be thorough with the map of India, like these questions are asked, right? Which of the following pair of the states indicate easternmost and westernmost state? अभी ये तो वेरी सिंपल है, मतलब 2015 में पूछा है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट? देन द न्यूज आइटम्स. नाउ news items will be taken care by me, no need to worry. When I will be teaching you the, or let's say in lectures, हम लोग तो वहां पे करंट अफेयर्स में देख ही रहे न्यूज आइटम्स. When I will be bringing the video, the second part, the part 2,
वहां पे इंडियन लोकेशंस जो न्यूज में है वो मैं वहां पे कवर करूंगा, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफिकल लोकेशंस इन न्यूज, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखी है। इंडियन ज्योग्राफिकल लोकेशंस इन न्यूज, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन ओवर हियर, राइट। फॉर डेली MCQs on these kind of locations, join this telegram channel, right। यहाँ पे अपने MCQs देखने मिलेंगे आपको, ठीक है। Basically, the channel which I started, it was more focused on history MCQs. Many of the students with whom I met on the mentorship calls, तो उन्होंने बोला सर जोग्राफिकल लोकेशंस भी लाओ, सर मॉडर्न इंडिया वाले क्वेश्चंस भी लाओ। तो सारे ही चीजें चल रही है वहां पे, राइट। ट्रिक्स भी चल रहे हैं वहां पे, प्रीलिम्स रिलेटेड जो ट्रिक्स लगते हैं ना, कुछ कुछ एलिमिनेशन हैक्स एंड ऑल, तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। यू कैन डायरेक्टली रेफर टू दिस, ठीक है। इट्स अ फ्री इनिशिएटिव, कुछ करने की जरूरत नहीं उसमें, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द Indian geography map based questions, right? Drainage system. Now this is your part to be done. बेसिक जो रिवर्स है एनसीईआरटीज में, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो आप करना ही है। थोरो मैपिंग ऑफ इंडिया आपको पता ही चलना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस बच्चों को पता नहीं होते यार, ठीक है। दे डोंट इवन नो हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर, दे डोंट इवन नो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर। स्टेट है कि नहीं, यूनियन टेरिटरी है कि नहीं, वो भी नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, लद्दाख, इज लद्दाख अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी? Yes, students. Okay, good, good. Good to see that you people are aware about. But कुछ बच्चों से मैं बात करता हूँ तो दे आर नॉट अवेयर एग्जैक्टली, राइट। ठीक है, फाइन, लेट्स नॉट डिस्कस दिस थिंग्स। ये बेसिक इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अभी ये तो चेंज हुआ है, इट्स लद्दाख, ठीक है। गेट द अपडेटेड वन एंड सी इट, see the important cities as well. Important cities also you should study. Important cities by important cities I mean the capital cities and also the other important cities. Let's say Maharashtra का capital क्या है students, just tell me. Very simple question, महाराष्ट्र का capital क्या है? मुंबई, right? पुणे क्या है फिर? पुणे capital है क्या? नहीं है। Usually it's said that Pune is the cultural capital of Maharashtra, but also another important city is there in Maharashtra, Pune. Then the third important city, Nagpur. तो ये तीन important cities हैं which are not like out of Maharashtra. Mumbai is the capital, Pune and Nagpur is not the capital, but वो important cities भी है। तो ऐसे जो important cities है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे located है। Okay, got it? Then उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? वेरी सिंपल, क्या है कैपिटल? गुड, ठीक है, लखनऊ। अभी वहां पे क्या चल रहा है? right now which location is in news over there? Daily you will see the updates. IIT बाबा, got it? कुंभ मेला प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज, ओके। प्रयागराज का लोकेशन कहाँ पे है, मार्क कर लेना कहाँ पे है वो, ठीक है। देन अच्छा, अभी सिंस कुंभ इज इन न्यूज तो आई केम टू नो कुंभ मेला में प्रयागराज लोकेशन एंड रिवर्स, ठीक है, रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस वहां पे हो रहा है, राइट। देन ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, एक जनरल आइडिया आपको हो जानी चाहिए, ओके। ऑल दिस थिंग, दिस इज हाउ यू शुड बी स्टडिंग द इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, राइट, ओके, फाइन। लेट मी ऑफ द स्पॉटलाइट, ठीक है। नाउ सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, now need not necessary that गोदावरी needs to be in news, न्यूज में हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बट बेसिक एनसीईआरटी में आपके इसका आंसर है, राइट। तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये कंटेंट जो है बेसिक एनसीईआरटीज में भी मिलेगा, गॉट इट। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, ठीक है, प्रणहिता, पेन्नार, सॉरी, प्रणहिता एंड इंद्रावती, नॉट पेन्नार। पेन्नार इज इट्स अ डिफरेंट रिवर, राइट। This is Pranahita river and this is again इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती कमिंग फ्रॉम दिस रीजन, प्रणहिता, ठीक है।
एंड यहाँ से है गोदावरी का जो मेन रूट, ठीक है, इट मूव्स टू द बे ऑफ बंगाल हियर. तो बेसिकली when you look at any river from your basic NCERT, as I have highlighted, simply write the name of river, make a column, ठीक है. All these will be your left bank tributaries, all these will be your right bank tributaries, ठीक है. यहाँ पे नेम लिख लेना, नेम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, ठीक है. वन मोर थिंग यू शुड डू, if any dam is there which is built on that particular river, or if any waterfall is there, or if any lake is there which like which is being fed by that particular river, तो इसका भी ना कहीं इसमें मेंशन कर लेना. सो व्हेन यू विल मेक द नोट्स ऑफ रिवर ड्रेनेज, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन रिवर वाला जो का जो चैप्टर है वहां पे, इसमें ये सारी चीजें डाल दोगे ना, इट्स इनफ, ठीक है. हियर यू कैन मेंशन द सोर्स एंड द माउथ ऑफ द रिवर एज वेल. बस ये पूरे माइंड मैप में सारी चीजें हो जाएंगी आपकी, राइट. इंपॉर्टेंट रिवर्स की जो ये जो माइंड मैप्स है ना, इसमें सारा कुछ हो जाएगा. आई विल ट्राई टू कम अप विद द माइंड मैप, ठीक है. गिव मी अ लाइक टाइम ऑफ मे बी लाइक 10-15 days. आई विल ट्राई टू कम अप विद द माइंड मैप ऑल्सो, ठीक है. आई विल शेयर दिस माइंड मैप, ये जो ट्रिब्यूटरीज वाला ना, मैं कुछ देखता हूँ करता हूँ, अपने कंटेंट टीम से बात करके अपन यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है. नीड नॉट वरी. फाइन. नाउ which one, which of the following is or are tributary or tributaries of Brahmaputra, ठीक है. अगेन द सेम थिंग, बेसिक रिवर ब्रह्मपुत्र एनसीईआरटी में दिया गया है, यू शुड बी डूइंग इट, ठीक है. समवन इज आस्किंग सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन द माइंड मैप. सो साक्षी, सी, this is how you should do. First, write the name of the river, write the name of the river. Above you can write the uh, source of the river, where exactly is the source, where is the mouth of the river, ठीक है. by source and mouth you can understand, right. source कहाँ पे क्या रहता है, mouth क्या रहता है, right. then these are the left bank tributaries, these are the right bank tributaries, left bank tributaries, right bank tributaries, इनका नेम यहाँ पे लिख लेना क्या क्या है, ठीक है. and then dam, lakes, okay, any waterfall if there. one more thing, if any protected area is there, by protected area I mean any national park, wildlife sanctuary, whatever it is, अगर कुछ ऐसा है यहाँ पे तो देख लेना एक बार, ठीक है. and this is how you should make the mind map. Fine. This is what you should be adding in the mind map, right. Okay. mind map कैसे बनाना है, if you are digitally good, you can directly go on chat gpt, उसमें जाकर डायरेक्टली आप माइंड मैप बना सकते हो. if you are not digitally good, simply take pen and paper and start doing it. I would advise you people do it with respect to pen and paper, ठीक है. I would advise you people to do it with respect to the pen and paper. क्यों? क्योंकि जब आप एफर्ट्स लगाते हैं ना कोई भी चीज पे, याद रखो, अगर आप जब भी एफर्ट्स लगाते हो, ठीक है, कोई भी चीज करने के लिए, when you are writing down something, when you are noting down something, that puts more effort and that will help you remember the things for long. Okay. संतवाना किरण, वो स्टेटमेंट करेक्ट है किरण, वो जो आपने डाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है. ओके. फाइन. ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज, ठीक है. now these kind of questions again, bodh gaya, bagelkhand. now these questions, see, these question, for these questions again, it's not necessary that these locations should be in news. एक जनरल अवेयरनेस के ऊपर सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. आपको पता होना चाहिए कि बागेलखंड कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है, विदर्भ, ये सारे ना अपने जो रीजन्स है, ये प्लेट्यूज है, कहाँ कहाँ पे है, रायलसीमा, विदर्भा. यू शुड बी अवेयर वेयर एग्जैक्टली इज दीज लोकेशन सिचुएटेड, एंड उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले लोकेशंस कहाँ पे सिचुएटेड है. अभी ये जनरल अवेयरनेस का, इसका आपको बेसिक बुक में भी नहीं मिलेगा, ये करंट अफेयर्स में भी नहीं था. दिस वाज द पार्ट ऑफ योर जनरल अंडरस्टैंडिंग जो आप यहाँ वहां देखते आ रहे हो बचपन से, राइट. geographically close to the Great Nicobar, so this is how you should go with, right. now these kind of questions, if you travel by road from Kohima to Kottayam, how many minimum number of states will you travel.
अभी इसके लिए क्या है, कोट्टायम केरला में है, राइट। आपको कहाँ से मिनिमम नंबर ऑफ जाना है, तो ये अभी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी ओनली सॉल्वेबल इफ यू आर थोरो विद द मैप ऑफ इंडिया. Suppose by any chance if UPSC throws such kind of question to you people, you should be very much thorough with the geographical map of India, the political map of India. You should be aware, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस, एक स्टेट जो है कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है. लेट मी आस्क यू पीपल, अगर झारखंड मैंने पूछ लिया आपको, विथ विच ऑल स्टेट्स झारखंड इज शेयरिंग द बॉर्डर, ठीक है, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश इज नॉट शेयरिंग इट्स बॉर्डर, राइट. तो इस तरह से थोड़ा सोचो, इस तरह से अच्छे से इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखो, राइट. इवन आई कांट हेल्प यू इन दिस, ये आपको खुद से ही करना है. मैं कुछ आपको यहाँ पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भी नहीं देख सकता यहाँ पे ऐसे, राइट, क्योंकि इसमें तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा. तेलंगाना किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. इट्स नॉट शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद ओडिशा. गॉट इट. तो ये माइन्यूट माइन्यूट चीजें जो है ये आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा. गॉट इट. सेवन सिस्टर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन सिक्किम, ठीक है, काउंटेड एज 8. तो इनका लोकेशन देखो. ये आसाम जो है, आसाम इज ऑलमोस्ट शेयरिंग बॉर्डर विथ एवरी व्हाट कैन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट सिक्किम, डायरेक्टली बंगाल के साथ शेयर कर रहा है. तो ये आपको पता होना चाहिए. नॉट इट. दिस इज हाउ यू शुड बी थोरो विद द लोकेशंस. आसाम इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर विथ म्यांमार, बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है. सिंपल सिंपल चीजें है. यहाँ से एकदम सिंपल से क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व हो जाने चाहिए. गॉट इट. Same was the question, this previous question. See this one. Which of the following is geographically closest to the Great Nicobar? Sumatra, Borneo, Java, Sri Lanka. Many of them have thought Sri Lanka. श्रीलंका है ही नहीं. श्रीलंका यहाँ पे है कहीं. तो अपना पूछा है अपन ने, ये सॉरी ग्रेट निकोबार पूछा था. ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? इंडोनेशिया. दिस इज सुमत्रा, ठीक है. सुमत्रा आइलैंड, दिस पार्ट ऑफ इंडोनेशिया इज कॉल्ड एज द सुमत्रा आइलैंड. गॉट इट. तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से ही आएगा ये न्यूज में भी नहीं होती चीजें, राइट. दीज थिंग्स आर नॉट इन न्यूज, दीज थिंग्स आर नॉट देयर इन द बुक्स ऑल्सो. ये आपको जनरल ऑब्जर्वेशन से आएगा, देख लेना है आपको मैप बस. गॉट इट. नाउ अगेन सिमिलरली द ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखो. अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली. अभी ऐसे न्यूज में नहीं होते चीजें, ऐसे आपके बेसिक बुक्स में भी कहीं पे डायरेक्टली नहीं दिया है. ये जो है जनरल ऑब्जर्वेशन से आने वाला है. दिल्ली, राइट. सो इफ यू डायरेक्टली पुट अ लाइन स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली टू द साउथ, एक लॉन्गिट्यूड अगर आप देखोगे तो मार्क डाउन विच ऑल सिटीज विल बी देयर. हैदराबाद, नागपुर, पुणे. पुणे समवेयर सिचुएटेड हियर, नागपुर इज हियर, राइट. हैदराबाद इज समवेयर हियर. फिर क्या बचा? बेंगलुरु. बेंगलुरु विल बी समवेयर क्लोज. ठीक है. तो ऐसे एक जनरल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. हाउएवर सी, many of the students in 2018 committed this question as a wrong, in the sense मतलब वो उन्होंने मार्क ही रॉन्ग किया. इट्स नॉट पॉसिबल गाइज, ठीक है. हैदराबाद 78, नागपुर 79, बेंगलुरु 77, वन वन एंड सम, मतलब एक एक पॉइंट, डेढ़ डेढ़ पॉइंट के लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस है, राइट. It's humanly not possible, but take risk if in case you haven't solved multiple questions, if in case you are, let's say, stuck between two options, take risk, solve that question. ठीक है. If you have attempted a significant amount of questions, 80-85 questions attempt कर लिए है, I would not advise you solving this question. Okay. Fine. Glaciers, Siachen Glacier, should be aware about the Siachen Glacier, right? In general, any Indian citizen should be aware Siachen Glacier के बारे में, कहाँ पे है इसका लोकेशन. ठीक है. ये पूरा जो लोकेशन है यहाँ पे आपको आइडिया हो जानी चाहिए. गॉट इट. फाइन. इंडस रिवर सिस्टम, मेनी टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडस रिवर सिस्टम. इसके बारे में आइडिया रख लेना. फाइन. Again, these things are directly given in your NCRTs. So as I said,
इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में जो जो एनसीईआरटीज में आपके दिए हुए हैं वो सारे आपको पता चाहिए, पता होना चाहिए आपको। गॉट इट? वंशाधारा, अर्लियर इट वाज आस्क्ड, वी हैव सीन फ्यू मिनट्स बैक। ठीक है, एक क्वेश्चन में वंशाधारा वाज द ऑप्शन, नाउ इट्स आस्क्ड अगेन इन 2021। ठीक है, तो दिस इज हाउ द पीवाईक्यू थीम्स गेट्स रिपीटेड। ओके, different types of Himalayas, Sikkim Himalayas. I guess this is also there in the NCRT, Geophysical Division of India. एक बार देख लेना, ठीक है, माउंटेन रेंजेस एंड ऑल जहां पे मेंशन है ये सारी चीजें वहां पे है। ओके, नाउ रिवर्स, झेलम रिवर, कृष्णा रिवर, गंडक रिवर, एनसीआरटीज अगेन। See, with respect to reverse, you will get to see multiple questions directly NCERT से ही आते हैं ये questions. You need not refer to every like any other source. अमरकंटक हिल, all these hills, ये भी जो है ना ये भी NCERT वाला है आपका। Okay, so what is the source again for geography? Mapping के लिए, as I told, PYQ themes, NCERTs and the locations which are in news. बस इतना कर लिया इनफ है, तो आपका वो लोकेशन का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर इतना सब करने के बाद भी अगर आपसे वो लोकेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इट मींस दैट क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, लीव दैट क्वेश्चन। रिमेंबर, प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ लीविंग सम थिंग्स एज वेल। 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, 15 क्वेश्चन छोड़ने हैं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आउट ऑफ देम, राइट? अगेन सी, गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज। ठीक है, तो it was asked last year, you should be aware about, again this year also they may ask, right? Gomti, Gaggar, Gandak, Kosi, right? So there was a mnemonic during our times, जो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है ना, कि गोमती का घाघरा गंदा कैसे हुआ, राइट? इट वाज द mnemonic, गोमती का घाघरा गंदा कैसे हुआ। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कुछ, जी 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 के, एनी हाउ यू कैन रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर द mnemonics, फाइन। You can refer to this Ganga river system यहाँ पे, fine. Now these rivers, Barak, Lohit, Subansiri. Now I agree that these rivers are not there in the basic NCRTs, right? Now Barak river was in news, ठीक है, it was way back 2014 में वो न्यूज में थी। ठीक है, तो मतलब because of some another reason, right? एंड इसके ऊपर फिर बाद में भी क्वेश्चन आया हुआ है बराक रिवर के ऊपर, तो बराक रिवर अभी एक थीम बन गई। ठीक है, नाउ व्हाट आई आस्क यू पीपल टू डू इज रेफर टू दीज थ्री रिवर्स एज वेल, रेफर टू बेसिक्स ऑफ दीज थ्री रिवर्स। सो व्हाट इज योर होमवर्क? बराक रिवर, लोहित रिवर, सुबनसिरी रिवर, इसके बारे में ना बेसिक डिटेल्स आप देख लेना। एक्सप्लेनेशन में आई हैव गिवन अ फ्यू थिंग्स, बट go in detail, go explore a bit more, right? We never know, you can directly be asked Subansari river in the news, ठीक है, मतलब Subansari river in the exam, irrespective of news। PYQ में था इसलिए पूछा भी जा सकता है, so you should be aware about it, right?